welcome my dear students in this ICSE series for grade 10. So is grade 10 ki series mein the chapter number 1 is already completed, wherein I have done in detail with the chapter cell ho gaya, cell membranes ho gaye, cell membrane ho gaya, and the various organelles of the cell we have discussed in length. And then I had said that I would be bringing to you some of the questions related to this particular chapter. Because ये जो chapter है, children, this is the base for many chapters to come in, and ये बहुत ही important chapter है, not just for boards, मगर if you intend to take on biology for higher classes, तो ये NEET के लिए 11th 12th के लिए भी ये बहुत ही important chapter है. Yes. So let me just, before bringing you the questions which I have promised and which I have indeed brought for you, let me discuss the things that let us see what we have already covered. तो ये सारे जो cell organelles जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये सब हमने कर लिया है. We have done the living membrane part, which is the cell membrane. तो ये हमने किया है, cell membrane किया, फिर एक एक करके we started with doing all the organelles of the cell, which is endoplasmic reticulum, then Golgi apparatus ho gaya. I think we should put a comma here for the vacuoles. Then Golgi apparatus, ribosomes, lysosomes, centrosomes, plastids, each and every organelle has been discussed in detail. Then हमने nucleus और उसके सभी parts को भी discuss किया था, उनका location किया, उनका function किया, और उनके structure को भी देखा. ठीक है? And now we are ready to answer some of the questions. So I hope you are ready. This is your question number 1. देखो. What is the bacterial cell composed of, children? Cell wall composed of. Now, जब हमने cell wall किया, हमने किया था, तो we did mention about the composition of the cell wall. ठीक है? तो उसी में the question is, what is the bacterial cell wall made up of? Is it made up of phospholipid layer? Is it made up of cellulose? Is it made up of chitin? Or is it made up of peptidoglycan? These tick marks are not to be thought of as the right answer. Bolo kya hoga right answer, children? So what would be the right answer? Bolo. Phospholipid layer to kya hota hai? Jo pehla option, children, that is for our cell membrane. Phospholipid, this makes up our cell membrane. Cellulose makes up the cell wall in the plant cells. Chitin makes up the cell wall in fungi. So जो बच गया peptidoglycan, this is what is the right answer. ठीक है? Now moving on to question number 2. Mitochondria was first seen by, I told you, I had given you the names of 2 scientists और बोला था कि याद रखना कि किसने पहली बार देखा और किसने उसका नाम दिया था. So the options are given to you. One is Bender, Colliker, Schwann and R.G. Harrison. बताओ. बताओ. The answer is Colliker. Okay. Next question number 3. Aerobic respiration is performed by. Now, what is meant by the term aerobic? Aerobic means in presence of oxygen. So oxygen ke presence mein who does the respiration? So respiration is performed by ribosomes or mitochondria or lysosomes or chloroplast. तो हमने ये सारे individual organelles पढ़े हैं. Ribosomes के भी functions हमें पता हैं. Now I will not give you the functions of these organelles क्योंकि इन सारे organelles पे based questions मैंने डाले हैं आगे. इसलिए I'll remain quiet and slowly just give you the right answer, which is mitochondria. ठीक है? Moving on to the next question, children. Which of the following organelle in the cell is referred to as the suicidal bags or the disposable units? Kachra wala. Remember, I told that particular organelle as the kachra wala of the cell, who goes on and removes all the kachra of the cell. The options in front of you are lysosomes, nucleus, chloroplast, or none of these. So what's the right answer, children? Yes, I'm sure you would have guessed it right. It is lysosomes. Then coming to the 4th question, which of the following is useful for the synthesis of proteins and enzymes? ध्यान से पढ़ो बच्चों, हम लोग proteins
को सिंथेसाइज कर रहे हैं और एंजाइम्स को भी सिंथेसाइज कर रहे हैं। और ये काम कौन कर रहा है among these four organelles, whether it is smooth endoplasmic reticulum, Golgi complex, rough endoplasmic reticulum or mitochondria? And the right answer is children. हमने पढ़ा है each and every organelle. So the right answer is, बोलो, it is the rough endoplasmic reticulum. We said that the rough endoplasmic reticulum is responsible for the synthesis of proteins because they are associated with ribosomes. उनके ऊपर ribosomes होते हैं. Yes, if this is the cell membrane, तो अगर मैं यहाँ से बनाऊं, okay, this is the nucleus membrane which I am drawing. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पैरेलली, I mean not parallelly, but in continuation with the nuclear membrane, you see this structure which is called as rough endoplasmic reticulum. Now, why it is called as rough? Because it is studded with ribosomes. ठीक है? और जो part of endoplasmic reticulum जो थोड़ा दूर की ओर होता है, which is not studded with ribosomes, is called smooth, जो कि क्या synthesize करता है बच्चों? That synthesizes lipids. ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? दैट बेसिकली पैकेजेस एंड मॉडिफाइज द प्रोटीन्स एंड द एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है बच्चों, प्रोटीन्स और एंजाइम्स दो अलग अलग वर्ड्स सुन के। यू रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, besides nucleus, DNA is also present in which of the following organelles? Ribosomes, mitochondria, lysosomes and Golgi complex. तो डीएनए के न्यूक्लियस के अलावा डीएनए किन ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट है? मैंने बताई थी एक कहानी जिसमें दो ऑर्गेनल्स की कहानी मैंने बताई थी कि वो कैसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कैसे बदला. हाउ डिड अ प्रोकैरियोटिक सेल इवेंचुअली गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यूकैरियोटिक सेल is because of the inclusion of two organelles into the cell which behaved as an isolated independent cells. वो because they had the capacity to live independently, because they had everything that was required to live independently. And what is that everything that is required to live independently? You should be having its own genetic material. उनके पास अपना डीएनए है, तो डीएनए है तो आरएनए भी होगा, और फिर उनके पास अपना राइबोसोम्स हो गए, अपना साइटोप्लाज्म होगा ऑफ कोर्स. सो जिनके पास ये है, then probably they are able to they can sustain themselves. That is what is the primary thing that were present also in bacterial cells or the very primitive bacteria हो या चाहे आर्ची बैक्टीरिया तुम कह लो. ठीक है, तो ये प्रिमिटिव सेल्स में ये चीजें होती थी जिसकी वजह से दे कुड सर्वाइव एज इंडिपेंडेंट सेल्स. दे नीड नॉट हैव मोर सेल्स इन देयर बॉडी इन ऑर्डर टू कीप themselves alive because they could reproduce by means of these things. तो ऐसे कौन organelles थे? तो ऐसे दो organelles थे. One is mitochondria and what was the other organelle? It is chloroplast. Yes. Now moving on to the next question. If the ribosomes of the cell are destroyed, अगर सेल में राइबोसोम है, बताओ सेल में राइबोसोम कहाँ कहाँ है? सेल में राइबोसोम कहाँ कहाँ है? सेल में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी है. ठीक है, तो इन जगहों पे है राइबोसोम्स. अगर मैं राइबोसोम्स को डिस्ट्रॉय कर दूं तो क्या होगा? What do the ribosomes do? Basically, they are asking you the function of ribosome. तो बताओ, respiration will not take place. So, is respiration the function of ribosomes? Fats will not be stored. क्या storage of fats होता है क्या ribosome का function? Carbon assimilation will not occur. मतलब क्या kind of photosynthesis, carbon को assimilate करना. Yes. तो क्या that is the function of ribosomes, or proteins will not be formed. So, is protein synthesis the function of ribosomes? Yes, protein synthesis is the function of ribosomes. So if you are going to remove ribosomes from a cell, then obviously proteins will not be synthesized, will not be formed. तो ये बच्चों थे कुछ questions. Of course, these questions are not enough. We do need more and more of practice, and we certainly need the previous year's board questions as well. तो cell के वो सारे questions लाने से पहले, there are certain terms which I need to make you understand.
क्योंकि they will form, they are a part of cell. Those structures are part of the cell, and those terms, the explanation of those terms is required in order for you to be able to answer all the questions of cell properly. इसीलिए this particular lecture of today is based on helping you to understand few more terminologies जो कि आपको सेल के साथ भी पूछे जा सकते हैं या एज अ सेकंड चैप्टर के साथ भी पूछे जा सकते हैं. तो उसी सीरीज में in that process, in that attempt to help you understand few more terms that are also required to be able to, for you to answer all the questions or take everything from cell is मैं ये अभी का लेक्चर डिनोट करती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ द स्लाइड विच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 40 to 50 ट्रिलियन सेल्स. कितने सेल्स का बना है? 40 to 50 ट्रिलियन सेल्स. हम मिलियन जानते हैं, ठीक है, हम 10 लाख, देन बिलियन वी नो, yes, and trillion also we know, yes, figuratively we do know, but can you imagine this much number of cells or these many number of cells? Well, it is so difficult to imagine, और उससे भी ज्यादा complicated और difficult है ये imagine करना कि ये जो journey of 40 to 50 trillion cells में बनने की जो journey है, it actually began from one cell which is called as zygote. So हम एक सेल के थे, ठीक है, और उस एक सेल से हम इतने सेल्स के हो चुके हैं. So isn't that a very very interesting and a very nice fact? Now after this take a look at this particular structure. कौन सा structure की बात हम कर रहे हैं? Which structure is this, children? Obviously we are talking about nucleus, which is the director of the cell. हमने बोला था it is the most important part of a cell. Now, why did we say that it is the most important part of the cell? We said so because it is this particular organelle which is actually deciding all the functions that a particular cell is carrying out. It is deciding the fate of the cell, and the responsibilities and duties of all the other organelles are actually decided by the decisions which are taken on or taken within this particular organelle nucleus. तो क्या कौन है जो ये डिसाइड कर रहा है या जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के अंदर? ऐसी क्या चीज है जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि सेल किस तरह से बिहेव करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी? जैसे कि अगर वो पैनक्रियाटिक सेल है, बीटा सेल्स हैं, तो वो क्या इंसुलिन बनाएगी, या अल्फा सेल्स हैं तो क्या वो ग्लूकागॉन बनाएगी अलॉन्ग विद द अदर फंक्शंस ऑफ द सेल. ठीक है, तो बहुत सारी ये जो इंफॉर्मेशन है या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने का काम है फॉर अ पर्टिकुलर सेल ऑफ एन ऑर्गन, that is done mainly by the nucleus. And what inside the nucleus does that? It is this particular structure which is doing this. तो ये तो सारे organelle nucleus के जो सारे parts which you are able to see that we have already discussed. ये जो दिख रहा है आपको, ये endoplasmic reticulum के sister ने है बच्चों. Yes, I said that it is in continuation with the membrane of the nucleus. So these are the pores on the nucleus. This is eventually the nucleus. और ये जो आपको धागे जैसे structure दिख रहे हैं बच्चों, which is called as chromatin. हम इसी से related कुछ terminology, कुछ terms या इससे मिलते जुलते terms को समझने की कोशिश करने वाले हैं, because this forms the basis of our genetics, which is also the third chapter and also cell division. ठीक है, so what is this chromatin? इस structure में आपको कैसा दिख रहा है chromatin? Well, जैसे धागे जैसे दिख रहे हैं radiating out from the center called as the nucleolus. Yes, let me give you another diagram. अब इसमें आप ध्यान से देखो, कुछ धागे हैं न्यूक्लियस के अंदर, कुछ धागे हैं जिनमें क्रोमैटिन बोल दिया गया है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड is the nucleus and you can see some threads, और उन threads को फिर तुमने देखा कि ये X जैसे structure बन गए, ये ऐसे कुछ structures में convert कर गए. Yes, धागे जैसे structures जो तुमने देखे बच्चों, they were called as chromatin,
which eventually form this chromosomal structures in the center, which you can see. So we will try and understand these two terms as to when can you see them in the cell and what are they actually made up of, and how and when do they get converted, that this chromatin is actually forming this kind of a structure, X-shaped structure, which we are calling as chromosomes. ठीक है? तो chromosomes क्या है? Chromosomes का नाम हमने बहुत सुना है, बहुत ही fashionable word है biology में. Yes, like every biology student definitely knows or has heard the terms like DNA and chromosomes, etc., genes. ये सारे words सुने हुए हैं, but these words are actually very confusing words. If I ask you to clearly tell me the definitions or explain me the differences between these 2 or 3 terms like genes, DNA, chromatin, chromosome, chromatid, centromere, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं. So today's lecture is devoted to trying to help you clarify these terms and make you understand the slight differences which are present or which are there in these terms. So chromosome क्या है? आप इस डायग्राम को फिर से देखिए. ये जो धागा जैसा स्ट्रक्चर था, ये क्या था? क्रोमैटिन था. And then it got converted into this X-shaped structure, chromosome. Let us go back and see once again. ये जो धागे हैं, children, ये जो धागे हैं, ये chromatin है, ठीक है? And this chromatin is eventually getting formed into the X-shaped structure, which is being called as chromosomes. ठीक है? तो ये है chromosome, जो कि धागे, ये जो धागे थे, it finally converted it into chromosomes. और ये वापस फिर untwined भी हो जाते हैं. तो ये chromosomes क्या हैं? They are thread-like structures present in the nucleus. Yes, we saw everything happening inside the nucleus, and we know what do. They carry the genetic information from one generation to another generation. Now we know that we are similar to our parents, we are similar to our brothers and sisters. The siblings are similar to each other, though not completely similar. There is slight differences, and we do have similarities with our parents, though not completely resembling them, but we can very clearly make out our similarities with our parents. So who is the responsible factor for this particular or this similarity which an offspring shows with his parents or with his own siblings? So it is the chromosomes which are responsible for this transformation or carrying of the genetic information. So definitely something is there in the offsprings which is making something from the parents has been passed on into the offsprings, which is causing the resemblance between the offsprings and the parents. Yes, so what is that something? It is that something is chromosomes. Okay? Which we call as the carriers of heredity or passing on the information from the parents to the offsprings. मतलब offsprings parents की तरह बहुत ज़्यादा behavior में भी हो सकता है same हो, देखने में भी same होंगे, ठीक है? And they also play a vital role, not just heredity. अब heredity exactly क्या है? We will elaborate more on these terms when we discuss the chapter number 3, which is our genetics. और अभी chromosomes की हम और बात कर लेते हैं. What are the other functions? It is cell division, obviously heredity, variation, mutation also we'll be dealing in detail when we are taking up genetics, then repair and regeneration. तो ये सारे में role है chromosomes का, because we said that they are the important part of the nucleus. They are the ones who decide the activities of the cell. Cell क्या करेगा? अगर repair की जरूरत है तो cell को repair करना पड़ेगा. तो ये कौन decide करेगा? Who will decide that such a thing is required for the cell to carry out? So that information is present within the chromosomes. तो ये क्रोमोसोम जो X जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो क्रोमोसोम तुमने देखा X जैसा स्ट्रक्चर, once again in the previous slide which I have gone to, एक बार फिर से रुक जाओ और देख लो. ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो है, धागे जैसे जो पर्पल धागे हैं, ब्लू धागे हैं, वो देखो कैसे अब एंटवाइन होके जो क्रोमोसोम्स बन जा रहे हैं. ये कब हो रहा है? ये होगा जब इंटरफेस खत्म हो जाएगा. व्हाट इज दिस इंटरफेस? इंटरफेस नाम से क्या लग रहा है? इंटर मीन्स
इन बिटवीन टू, जैसे कि मूवी की इंटरवल होती है, मूवी के बीच में इंटरवल होता है, वेर इन द फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के बीच में एक ब्रेक होता है, वेर इन यू गो फॉर सम स्नैक्स और समथिंग. So inter-school competition means the competition between two schools, two separate schools के बीच का जो competition होता है. तो interphase मतलब obviously phase के बीच का. So which phase के बीच का? Phase of division. सेल डिवीजन, वन सेल डिवीजन और दूसरे सेल डिवीजन के बीच का जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेस इन द लाइफ ऑफ द सेल. ठीक है, तो उस इंटरफेस के दौरान व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, अभी वो डिवाइड नहीं कर रहा है, only then you will see the nucleus having a network of very long, extremely thin, dark staining structures called as chromatin. और यहाँ पे एक और टर्म को मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी, डार्क स्टेनिंग फाइबर्स. नाउ दे वर कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर्स व्हिच इवेंचुअली वर फॉर्मिंग क्रोमोसोम्स. इनको डार्क स्टेनिंग फाइबर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे आर एबल टू टेक इन सम स्टेन्स. ना जब हम सेल और न्यूक्लियस के अंदर की चीजों को स्टडी करते हैं, डेफिनेटली वी मेक यूज ऑफ माइक्रोस्कोप. सो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली अंडर अ माइक्रोस्कोप, वी यूज सर्टेन स्टेन्स, जैसे कि एसिटोकार्मिन हो गया, जिम्जा स्टेन हो गया. तो अभी आपको ये नाम नहीं जानने हैं, इन द हायर क्लासेस, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग आल्सो. ठीक है, तो कुछ स्टेन्स वो लोग लेंगे. व्हेन द सेल इट इज स्टेन्ड विद सम काइंड ऑफ स्टेन्स लाइक एसिटोकार्माइन एटसेट्रा, तो यू विल सी दैट द some structures within the nucleus get stained, उनमें एक कलर आ जाता है, and then you are able to easily identify them below the microscope. So since they are able to take up color, which is also another word for chroma, so therefore these bodies were called as chromosomes. Zomes मतलब bodies. So nucleus के अंदर की bodies जिसपे कलर चढ़ जाता है, रंग चढ़ जाता है, yes, उन्हें हम कहते हैं chromosomes. और जब वो धागे के फॉर्म में है, they are in the form of long fine threads. Cub, remember children, cub, this is important. When can you see them? Sorry, ये ऐसे हो गया, very important. Interphase, then it is called as chromatin fiber. ठीक है, अब जब क्रोमैटिन फाइबर में ये आ गए इंटरफेज में, और अब सेल ने सोचा कि अब मुझे तो डिवाइड करना है, मतलब अब मैं इंटरफेज में नहीं रहूंगा, अब मैं 2 में टूट जाऊंगा या 4 में टूट जाऊंगा. ठीक है, 2 में टूटना को क्या कहते हैं, 4 में टूटना को क्या कहते हैं, कब टूटता है, क्यों टूटता है, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ द लेक्चर्स टू फॉलो. अभी इसके 2-3 लेक्चर में ही वो आ जाएगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अप एंड एक्सप्लेन्ड. बट द सेल इवेंचुअली डिवाइड्स और मल्टीप्लाइज. यहाँ बायो में डिवाइड्स एंड मल्टीप्लाइज विल मीन द सेम. अभी अभी हमने पढ़ा ना स्लाइड कि वी आर मेड अप ऑफ 40 to 50 ट्रिलियन सेल्स, और हम एक जाइगोट से उतने बड़े सेल बने हैं, तो हम मल्टीप्लाई किए होंगे या डिवाइड किए होंगे तभी तो इतने सारे हो गए हैं. सो वो डिवीजन क्यों हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब वी विल स्टडी इन द सेल डिविजन टॉपिक. ठीक है, लेकिन फाइनली जब सेल ने डिवाइड करने की सोची, मतलब उसने बोला कि अब मैं इंटरफेस में नहीं रहूंगा, then what will happen, those fine thread like structures will get condensed into this X form structure and it will be called as chromosomes. ठीक है, और जब ये डुप्लीकेट कर जाएगा, सेल डिवीजन के दौरान ही ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है वो डुप्लीकेट कर जाता है, मतलब इसके अंदर कुछ होता है. व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड इट, द डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड इट. यस, तो ये जो डीएनए है ये डुप्लीकेट कर जाएगा, तो देन वी गेट दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर. सो व्हाट यू गेट सी हियर एज एन एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, दैट इज एक्चुअली आफ्टर द डीएनए हैज गॉट डुप्लीकेटेड विद इन इट. ठीक है, अब ये बीच का जो हिस्सा जो इसे जोड़े हुए है उसे कहते हैं हम सेंट्रोसोम. ठीक है, सो लेट मी गिव अ रीडिंग टू द लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन. एज द सेल बिगिंस टू एंटर द फर्स्ट फेज, मैंने बोला कि अब सेल बोल रहा है कि मैं इंटरफेज में नहीं रहूंगा, अब मैं डिवाइड करूंगा. तो डिवीजन का पहले फेज का द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिवीजन के कई स्टेजेस होते हैं, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल डिवीजन इज प्रोफेज. तो प्रोफेज के दौरान व्हाट डू वी फाइंड, दैट दीज क्रोमैटिन फाइबर्स, ये जो ऐसे धागे जैसे हैं, दे हैव गॉट कंडेंस्ड इनटू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच वी कॉल एज क्रोमोसोम्स. ठीक है, और जब ये क्रोमोसोम के अंदर का डीएनए डबल हो जाएगा ऐसे, ठीक है,
तब आपको वो एक्स शेप स्ट्रक्चर ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। This is the diagram of interface, that how you would find the chromatin material, वो material जिसके अंदर DNA मौजूद है, that is chromatin material, और chromatin network, क्योंकि ये बहुत network और जाल की तरह है, तो ये interface में ऐसा दिख रहा है when the cell is not dividing. And when the cell has decided that now it will divide, then what do we see? कि जो इतने सारे धागे हैं, they have got condensed into this X-shaped structure called as the chromosome. You can see it in this labeled here as chromosome, and they are this X-shaped structure, ठीक है ना। और ये बीच में जो है इसे हम सेंट्रोमियर, और जो बीच में है इसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरी सेल में, हर सेल में, अच्छा, before I tell you some facts about this particular thing called DNA and chromosomes, let us see who is the person who discovered it. और पहली बार किसने देखा? They were first discovered in 1882 by a German scientist Walter Fleming. तो 1882 वो साल है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई है. नॉलन रस्का had discovered the electron microscope. So you only had light or compound microscopes before till then. Okay, so जिससे कि बहुत हद तक आपको मैग्निफिकेशन नहीं मिल पाता है. Yes, you were able to magnify up to 50 or 100 times, few hundred times तक भी, मगर इतना नहीं कि you can see them under a microscope वेरी क्लियरली. तो इन्होंने देखा उसको, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि इन्होंने जो देखा है वो एक्चुअली में क्या है, कैसा है, ठीक है. इन्होंने फिर उसको कलर करने की कोशिश की, एंड दैट इज व्हाई when they got colored or they took up the stain, so he called them as chromatin, ठीक है. And when did he see them? He saw them during the cell division, and the name of cell division is माइटोसिस इज द नेम ऑफ सेल डिविजन. तो सेल डिविजन जब हो रहा था, यानी माइटोसिस जब हो रहा था, देन he saw that some colored things are present inside the nucleus, and who saw it? It was Walter Fleming, ठीक है. And then later on, देखो ये chromatin fibers, एक और diagram where you can see in the interphase of the cell, and ये late interphase है, interphase का वक्त थोड़ा बीत गया है, and prophase has begun, that is cell division. Cell has entered into the process of cell division. Okay, it is no longer into interphase. Then we have another scientist, Carl Nageli, who observed the rod-shaped structure chromosome. Rod-shaped क्या है बच्चों? इसी को हम rod-shaped कहते हैं. इसी को हम rod-shaped कहते हैं. मतलब kind of a piece of paper अगर मैं बोलूँ, या जैसे कि अब ये है, मान लो ये पीस ऑफ पेपर है, दिस इज द मास दैट आई हैव टेकन, इसको मैं फोल्ड कर दूं, इसको अगर मैं ऐसे फोल्ड करती जाऊं, so will it not become rod shaped? Is it not becoming rod shaped? Tell me. It is becoming rod shaped, isn't it? It has become rod shaped. Yes, आपको दिख रहा है कि ये rod shaped हो चुका है, ये फोल्ड हो चुका है. Yes, अब ऐसे कर दो इसे, तो ये रॉड शेप्ड हो गया है क्रोमोसोम की तरह. कैन यू सी? I don't know whether you are able to see or not, children, but if you fold any piece of a paper इस तरह से, तो वो उस तरह का एक काइंड ऑफ डिपिक्शन है, समझाने की कोशिश है कि वो कैसे रॉड शेप्ड हो गया है. रॉड शेप्ड हमने अचानक. सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास, चिल्ड्रन, एंड होपफुली ऑल मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड. सो सी यू, प्लीज स्टडी एंड कम, एंड लेट अस मीट फॉर द next class tomorrow. Thank you very much.